Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the She Sparks, a revolution on Pakistan Resolution Day. A very special welcome to everyone joining us virtually for She Sparks, a revolution, women entrepreneurs redefining education. Today hold a significant place in Pakistan history, as you know, marking the 23rd of March, Pakistan Resolution Day. This day reminds us the Lahore Resolution of 1940, which laid the groundwork for an independent Muslim homeland. It's a day that celebrates the vision, courage, and the unity that led to the creation of Pakistan. As we honor this historical period, we find a beautiful synergy with the theme of our conference, She Sparks a Revolution. This virtual gathering celebrates the revolutionary spirit of women entrepreneurs who are redefining education, much like the leader who envisioned a separate homeland. Here at She Sparks, you will be inspired by talented women entrepreneurs, definitely, actionable insight and strategies, and powerful connection. This conference is a call to action. We want to ignite a movement driven by our collective power to empower future generations. Just as the leaders of the past dare to dream of a new nation, we want you to dream big for the future of education. Let's use this platform to ignite a revolution. Let's your idea sparks positive change and redefine education for a brighter future, not just in Pakistan, but for the entire world. Thank you for joining us on this special day. We are honored to have you a part of this revolutionary movement. Now, let's get inspired, connect, and spark the change we want to see. First of all, thank you so much, all of my esteemed guest speakers, to be here with me. It's an honor for me. I will introduce one by one each of you. First of all, let's meet Sadaf. Sadaf Azim is a distinguished educationist and certified life coach. With a holistic, heart-centered approach, Sadaf's dedication to empowering individuals in their personal and professional development knows no bound. With her wealth of experience and unwavering commitment to well-being, she inspires positive transformation and happier, fulfilled lives. Thank you so much, Sadaf, for coming. And next we have internationally acclaimed artist and designer Hijab Fatma. Hijab remarkable art and interior design projects have felt a lasting mark both locally and internationally. From iconic monuments to expressive renovation, her portfolio speaks volumes about her talent and dedication. Beyond her creative endeavor, Hijab remains deeply engaged in community development and education, her commitment to making a difference. Now, last but not the least, we meet Javeria Tamim, a true inspiration. For the past 21 years, Javerias have carved an impressive path, excelling in the field. From school management and IB teaching to corporate training, project management, even in the Canva design and well-being coaching, her skills or experience are incredibly diverse. So we welcome all of you. Thank you so much for coming here. And it's really honor to have you on board in the She Sparks Revolutionary virtual conference. I would like each and every one of you to start your introduction by yourself, highlight what you are doing, your achievements for shortly. Let's start just with Sadaf. Yes, Sadaf, tell me about yourself. Thank you so much for your introduction, Humaira. So I'm Sadaf Azam. I started my career in the field of education 24 years ago as the school teacher, then became a college lecturer and a counselor. I got promoted to the roles of education leadership, like being the head of the school and the principal. In 2014, I went to Oxford University to upskill myself and did a course in for leaders in education. I've designed curriculum for a few schools. I've been an educational consultant for a few schools. As the school head and curriculum designer, I realized the importance of hidden curriculum and well-being of students and children. And then I started working on the holistic grooming, social and adjustment skills, personality development, habit formation, identity formation,
emotional regulation, things that they were overlooked normally in schools. So starting working for that, I assumed a role of a mentor and a counselor over and above the designation that I was enjoying at the school at that time. Other than that, I had been a college counselor for 2 years, formally also. So I was trained for that. I assumed the role because I felt that was the need of the hour. Working in O-level stream mostly, I witnessed a rat race for grades, causing a lot of stress, anxiety, and depression in students. I witnessed the full-time teachers being really burnt out. And at that point of time, I felt that my real success would be to have happy learners as students and happy workers and team members for teachers, which in turn, of course, ease the woes of the parents also. And the gratification that I felt by helping these students, teachers, and parents was far beyond any academic success or outstanding results that we achieved. And that is why I decided to become a life coach. There are very few in Pakistan and hardly any in Islamabad. So I went for my international ICF certification for life coaching by Mind Valley. My niche is, again, as you would guess, children, students, parents, and professionals. So I'm serving as a life coach, along with being the school counselor and principal high school for Red Oak High by the Treehouse. Thank you so much. So nice to hear from you. Now we will move forward to Javeria. Yes, Javeria, just tell me about yourself. Ji, Assalamu alaikum. Thank you, Mira, for your kind words. So I have been an educationist for like last 23 years. And my journey started when I was myself a student and I started teaching alongside. And my first job was college, and which was a very, very exhilarating experience because I was teaching with my teachers. So there was a lot of learning, a lot of mentoring. And so I, started with the best and still following their footpaths. Like I would want to name a couple of my teachers like Mrs. Shaista Zaid and Mrs. Farad Shah and Rahila Durrani. So iconic English literature teachers in Islamabad and in all over Pakistan. So started my journey working with them and did my first master's in English literature, did my second master's in international relations, did my MPhil in, again, English literature, and still for like last 10 years pursuing my PhD and still nowhere with it. So that's like my, academic journey. Then I did my certification in school management and leadership from Harvard University and did a number of courses, did Franklin Covey and customer services courses and a lot of trainings to, establish the fact that there is no end to learning, first of all. And secondly, I passionately believe in personal growth, in self-development. And that's what I keep talking about at all forums, that there is no end to personal growth. There is no end to that. You can never, say that you've reached that capping. So did that alongside with my school management experience in private schools and trainings in public and government schools. I've been working a lot with several INGOs, out of which I would want to mention one, जिनके साथ एक बड़ा दिली ताल्लुक है और एक होता है कि आप वर्ल्डली मैटर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, मॉनेटरी गेन्स के लिए भी कर रहे होते हैं, करियर मेकिंग भी हो रही होती है. But this NGO, I work with it because थोड़ी सी आपकी spiritual development भी ज़रूरी है और वहीं से फिर आपकी well-being stem करती है. So this is a Turkish INGO I work with called IHAHA, and they work with rehabilitation of Syrian refugees. Basically उनका main purpose वो है, but then they go around the world and wherever they feel any kind of crisis, they offer their services. So it's a pleasure working with them. Been to Syria myself, which I think is the biggest feather in my cap. Nothing can surpass that. True. Working with those refugees, seeing them, sitting with them, and just trying to get an iota of the trauma that they've gone through. So that is something that really gives me some purpose in life.
कम्युनिटी सर्विस बहुत की है ट्रांसजेंडर्स के साथ स्पेशली, और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के लिए। वो तो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन्स हैं मेरे बाकी कामों से, लेकिन कोशिश ये रही है कि जहाँ पे भी अपना पोटेंशियल इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी नज़र आए और कुछ कंट्रीब्यूट करने की अपॉर्चुनिटी नज़र आए सोशल फैब्रिक में, सो आई डू ट्राई के वहाँ पे पिच इन कर देना चाहिए। एंड अलॉन्ग द वे आप लर्न कर जाते हैं, सो ओवरवेल नहीं होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है, व्हाट विल आई डू इन इट। Lastly, currently I am teaching epistemology to a number of international Ivy schools. Research methodology पढ़ाती हूँ, theory of knowledge पढ़ाती हूँ, and deductive thinking. So, which, as I always say, कि entrepreneurship के लिए ये skills बहुत integral हैं. So this is what I've been doing and currently engaged in. Thank you. Thank you so much for giving us such a diversified experience of you. Yeah. I mean, mashallah, Thank I'm you. really pleased to have you on board. And now coming back to Thank you so much. hijab. Hijab, yes. Tell me about yourself, because आपकी never-ending story है, so I want you to speak now. I have a never-ending story, and yes, quite an unusual one, I feel. Actually, I had a very different course of learning myself, and again, a very unusual kind of a working practice as a narrative environmentalist and somebody who is a tourism specialist, cultural specialist, culture specialist. Visual anthropology is one of my domains, and how I integrate all of these ideas as a public artist. So where I combine like art, design, and architecture for awareness and education purposes. So once people ask me that what do you do, so it's like really, it's an amalgam of so many I just tell them that I create like narrative spaces where like all these genres of creativity, I just combine them together. So I giving you a brief perspective of my career and my learning. It was like I started my professional practice as a 10-year-old kid. So I was earning, I was working on mainstream projects, and then I got my admission in National College of Arts, Lahore. And there I was like inducted in the Department of Product Design and Visual Arts. After completing my 4 years degree, I got a scholarship for Fakuka for Asian for museum curation. But somehow I won Pakistan Monument at Shakarpariya, if you see, currently as a 22-year-old, because myself and my mother, we were working as a mother and daughter duo. So it was like kind of somehow I couldn't obviously join my MS degree course due to my national kind of a responsibility. So then obviously I carried on with my practice for good 10 years, and then I thought that I should be continuing with my education further. So I got like my admissions in King's College and Royal College of Arts, London. But then again later I got Sindh Assembly. So it's been like, a cycle of like, and I ended up like lecturing in King's College and Berlin University and all of those colleges where I got admission in. So I think thoda sa the kind of practice that defines my work is Pakistan Monument. Then I got the chance to design Sindh Assembly, Karachi, Senate of Pakistan. So it's been like I've been involved into good scale national and state level projects. Besides that, I have this practice has been paralleled with the community school that I own. जिसमें ये है कि the students that come up to me, I just give them a free platform regardless of their age, regardless of certain curriculums that we follow, and we just enhance and encourage their inner capabilities, abilities, polish them in terms of creative arts.
And other than that, I have you can say it's whatever they create, whatever I as an artist or as a designer create, and all of my students, I have this Gachrang lounge, which is a furniture and an art and an you can say a craft initiative that my students and myself, we all come up with. So it's I basically, but this entire practice is about a community school, a showroom lounge, and then my practice on in terms of projects. So it's been a 23 years of journey, and with the grace of God, I'm like able to teach 40,000 plus students in all of my career, and more than 400 projects of the similar kind of nature that I've mentioned. So this is my humble contribution. This is not, this is your humble that you are saying this thing, mashallah. I don't have the words for all of you to speak, because mashallah, you are doing incredible. You have done incredible, jobs. And I'm really honored that you are coming it with such a diversified experience. Then we, today is the time, today is this platform, we can gain maximum out of you, inshallah ta'ala. So this is all about the introduction of our esteemed guest speakers. Now moving towards the main theme of our conference, inshallah. This is all about that she sparks a revolution. So being an educationist, being a entrepreneur, being a teacher, because you are माशाल्लाह मल्टी डाइवर्सिफाइंग किस्म का आप लोगों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे एक वर्ड पे और एक पोजीशन पे मैं आपको वो कोट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इसलिए ओवरऑल आपको ये आप तीनों को ये मैं कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह यू आर सो मच टैलेंटेड एंड डायनामिक लेडीज. आई वांट यू टू स्टार्ट विद दैट द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, she sparks a revolution. So as per this synergy of today's day of 23rd March, I want you to highlight on this, that from the day that we have our leaders, they have come up with some idea, and that their idea turns into that reality in the form of Pakistan today. So what do you think? So I will start it from Sadaf. Do you think so we could be able to achieve that dream today where we stand in terms of education? Because Qaid-e-Azam, it's a famous quote of Qaid-e-Azam that there are two most powerful thing in this world. One is that pen and one is the sword, and third one is this more powerful, which is the women. So if you are women, you are educationists, you are entrepreneurs, you are a dynamic leaders. How do you feel? How do you think so that you, based on the idea of our leaders, where we stand right now? I just want to ask this thing. Yes, we will start it with Sadaf. Sadaf, can you please highlight on that? Yes, thank you. So, where we stand is actually not where we can actually stand. So, which is a little sadder than all the amazing work and accomplishments that these two brilliant ladies have mentioned. I mean, there's so many like you who are doing so much that we don't know of on different fronts. And Hajra is not here. She's done miraculously well too. Yes. So we are such amazingly talented lot who has taken the initiative in so many diverse ways and done so much. Yet, the way we talked in the last conference that we attended, that a lot of collaboration would give us the strength that maybe the individuals that are working in their own quarters are not getting the recognition for, or not getting the strength and all the resources that they probably can if we work together. So the first thing which is a dilemma is, despite of all the amazing talent and capability that this country possesses, whether it comes to students or women, there is a lack of opportunity. And those opportunities are maybe we have to bring in. We are the ones who need to do it, because we're the privileged class. Alhamdulillah, we have the opportunities that many others don't. So maybe if we come together, collaborate, and make these partnerships where we support each other in our weaknesses and become a united front, and then support the ones who don't have these resources.
and opportunities, but are immensely talented, maybe more than we are. I think we are more privileged than talented because Allah gave us so many opportunities to do so much. And there's so many who are hidden gems in Pakistan. And we need to really find them out and help them and support them. Maybe when it comes to taking initiatives and innovation in education, like Humaira just said, this is what we need to do. We need to give these platforms to the women, to young students, young girls who have the potential, but the potential is rot. They're getting married, they're rearing children, they're making roti in the kitchen, and that's how they spend their lives. So I mean, if we do have people like us combining our talents and opportunities and resources to have a platform for such women, it would be immensely helpful for the country. Yes, thank you so much. Yes, Javeria, what do you say about that? Because you, mashallah, have been gone through all the stages of that educational field and towards that the initiative that you have taken internationally also. So how do you feel that where we stand right now in terms of education? Okay. So I'm a very old school person. Let me put that first. I'm a very, very old school person. And I believe that it starts from our homes. And women in homes are mothers, obviously. Yes. So as an educationist, I feel it starts from the mothers, from us. Irrespective of our designations, irrespective of our qualifications, our careers, irrespective of anything else, it starts from this basic blessing that we've been given of motherhood. And we must take a lot of pride in being a mother, first of all. Or the woman of the house, even if not the mother, because we are the ones who are dealing with the men in different capacities. And when we are dealing with men, it means that we are dealing with the future businessmen, we are dealing with future entrepreneurs, we are dealing with future CEOs. And we are supposed to inculcate certain skills in them, which we first need to develop in ourselves, right? Now, the dilemma is that while a woman is doing all this, she forgets that she can also be the entrepreneur. She can also be the businesswoman. She has imparted those skills in people around her, but forgotten कि उसके अपने अंदर भी ये ability अल्लाह ताला ने डाली हुई है. तो मेरे ख्याल में घर से शुरू करते हैं. और मदरिंग में मैंने एज अ मदर जो चीज़ सीखी है with the long list of mistakes, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरी टेक अवेज हैं जो मैंने ओवर द इयर्स हर यंग कपल को, हर यंग पेरेंट को बताई हैं कि आप अगर अपने बच्चों में एक तो आदत डाल दें कि नॉट टू टेक मनी फॉर ग्रांटेड नो मैटर हाउ ब्लेस्ड यू आर फाइनेंशियली, मेक देम अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी पेनी, टेल देम that if they are going and getting anything, they have to get the receipt. They have to do the, जिसको हम layman terms में लिखत परत कहते हैं, documentation कहते हैं. ये घर से सिखाएं उनको ये चीज़ कि ये ज़रूरी है. It's a habit that is going to go a long way. उसके बाद आप उनके अंदर जो प्रेशर हम देते हैं academics के नाम पे, वही प्रेशर मैंने भी दिया as a mother. लेकिन मैंने ये देखा कि अगर मैं उनकी हॉबीज़ को उनका प्रोफेशन बना दूँ, क्योंकि मैंने अपनी हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बनाया, वो इसीलिए वो ढेर सारे प्रोफेशन हैं क्योंकि ढेर सारी हॉबीज़ थी. अगर वो अपने हॉबीज़ को हम थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं उनकी हॉबीज़ को और उसी में उनका करियर पाथ उन्हें बना लेने दें, तो दे कैन डू वंडर्स. दे कैन डू वंडर्स फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है. हम बहुत आगे आ गए हैं, दुनिया बहुत आगे आ गई है, जॉब मार्केट बदल चुकी है. We do not need more doctors and more engineers. We do need more artists. We do need more poets. We need more writers. We need more people from social sciences. We need environmentalists. And then, yes, doctors and engineers and, chartered accountants, they are like the backbone of any country's well-being in their own way. But then there are so many other ways in which you can contribute to the society. So हमें निकलना पड़ेगा. अभी तक ये माइंडसेट में हम 21st सेंचुरी में, लेकिन अभी भी मैं अपने दफ्तर में बैठ के देखती हूँ कि बहुत सारी माओं को एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि नहीं यही बनाना है और यहीं से पढ़ाना है. एक तो इससे बाहर निकल आए. तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि हमारे करिकुलम्स में
हम बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, हम कॉमर्स में भी बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज करा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी चल रही है, लेकिन हम कहीं भी बच्चों को इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा रहे। हम उसको टच करते हैं, हमारा करिकुलम उसको ज़रा सा टच करता है कि वो होता क्या है, लेकिन वो करनी कैसे है अपने लोकल, अपने रीजनल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट यहीं से लेना है, और उसके बाद इंटरनेशनली उसको हमने वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट में कैसे खुद को, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो अगर हम जब तक ये प्रैक्टिकल स्किल्स उनको नहीं सिखाएंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग सम पॉकेट मनी टू योर चाइल्ड, even from that pocket money, tell him how to budget it, tell him how to spend later and invest first, spend later and save first। फिर सेव करके भी मनी डी वैल्यू हो रही है, तो उस मनी को आपने डी वैल्यू होने के लिए इन्वेस्ट करना है, उसे बचाने के लिए। सो ये एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है, ये घर से स्टार्ट होगा और फिर करिकुलम डिज़ाइन में जाएगा, और उसके बाद ऑब्वियसली हम उनको लेटर स्किल्स में लेके जाएंगे। कमिंग बैक टू वेमेन, जेंडर इनहिबिशन से बाहर निकल आना चाहिए। इस वक्त दुनिया की जो बहुत सारे लीडिंग कंपनीज हैं, उनकी सीईओज, उनके डायरेक्टर्स जो हैं वो फीमेल्स हैं। एंड ऑटोमोबाइल्स को देख लिया अगर आप, द सीईओ इज अ वुमन। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, वहाँ पे टॉप टियर जॉब्स में, टॉप टियर मैनेजमेंट लीडरशिप पोजीशंस में खवातीन बैठी हैं। हमारे यहाँ खवातीन को लगा कि सिर्फ वो एक सर्टेन फील्ड में, जो होम बेस्ड खवातीन बिजनेस करना चाह रही हैं, वो सर्टेन फील्ड्स में कर सकती हैं। सो बहुत सारे मशरूम हो गए, बहुत सारे हमारे बिजनेसेस रिलेटेड टू कुकिंग, रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू डिजाइनिंग, क्लोथिंग लाइंस, ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए, और हमें लगा कि बस हम यहीं तक लिमिटेड रह सकते हैं। इस माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलें, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इन माई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस, I've been leading teams of men, unlimited men, number of men, and क्योंकि कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से ताल्लुक रहा, ज़्यादा उस साइट पे काम किया, तो आपने मिस्त्री के साथ भी बात करनी है, आपने पॉलिश वाले को भी डील करना है, आपने यू नो वेंडर्स को भी हैंडल करना है, परचेजिंग भी करनी है, प्रोक्योरमेंट भी करनी है, बजटिंग भी करनी है। ये सारी स्किल्स हम में हैं क्योंकि हम अपने घर में ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। हम घर में सारे काम कर रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि एक तो जेंडर इनहिबिशन से बाहर निकल आए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और रिस्क लेना सीखें। बड़ी थ्रिलिंग हो जाती है लाइफ अगर हम रिस्क के फैक्टर को थोड़ा सा एम्ब्रेस कर लें। तो मैक्सिमम क्या होगा कि थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा प्लान एज इट इज नहीं फॉलो होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर रिस्क टेकिंग स्किल्स पैदा करें, परसिवेरेंस लाएं, ऑल इन ऑल उसको रेजिलियंस कहेंगे कि एंटरप्रेन्योर में या बिजनेस लाइन में, अगर हम उसको एंटरप्रेन्योर को सिर्फ उस लाइन में भी लेके जाएं, प्रॉफिट इज नॉट द एंड गेम, इट्स द जर्नी। सो अगर आप प्रॉफिट से अपना माइंड हटा लेंगे और ज़रा क्विक रिजल्ट से अपना माइंड हटा लेंगे और कंसिस्टेंटली काम करेंगी खवातीन, तो इवेंचुअली दे विल कम अप विद समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। So that's my 2 pence of wisdom about it. Thank you so much, जवेरिया, आपने इतने खूबसूरत तरीके से प्रिसाइसली जो है हर पॉइंट को जो कि इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। आपकी ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को मैं आगे करते हुए मैं चाहूँगी कि हिजाब उन चीज़ों, उन सेम चीज़ों पे जिसमें आपने हाईलाइट किया है, हिजाब उस पर्सपेक्टिव से, बिकॉज हिजाब का जो थ्रू आउट जो मुझे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि हिजाब आप उस चीज़ों पे हाईलाइट करें कि किस तरीके से एजुकेशन कैन बी फ्लोरिश थ्रू प्रैक्टिकल बेस्ड एक्सपीरियंस। आप बताएं हिजाब प्लीज़। माशाल्लाह, वही बात है कि मेरी बारी आखिर में आई है, तो ऑब्वियसली ज्यादातर चीजें कह दी गई हैं, बट मैं बात देखिए आखिर हिजाब आखिर में आने का फायदा है ना, आपको पूरा मैदान बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं बात अपनी शुरू करूंगी कैरेक्टर बिल्डिंग से। जी देखिए, हम अभी बात हुई कि क्या कहना, हमें
वी आर ऑल एक ऐसी जनरेशन है कि हमने बहुत ज्यादा एक मैसिव ट्रांजिशन हम विटनेस कर रहे हैं। बिल्कुल वो टाइम भी था कि जिस वक्त क्या कहते हैं हमारे मतलब 80s का टाइम भी हमने देखा, बिल्कुल और फॉर द लास्ट 40 years कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट चली गई। लेकिन बिल्कुल मुझे ये लगता है कि और इस डेवलपमेंट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, जिसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज के ऊपर जब तक नजर ना डाली जाए या उनको गौर में ना लिया जाए तो तब तक हम, जाहिर है, मैं एक बिल्कुल छोटे बच्चे से शुरू करूंगी, क्योंकि जाहिर है जब स्टूडेंट्स आते हैं तो एक नर्चरिंग का एस्पेक्ट, उनकी एक फ्लरिशमेंट का एस्पेक्ट शामिल होता है। तो उसमें आप ये देखें कि सबसे पहले तो, और खास तौर पे आज जो माशाल्लाह 23 मार्च है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि आगे इस हम एक कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग के हिसाब से एकेडेमिया को क्या लेके चल रहे हैं, और फिर हम उस एकेडेमिया को अगर उस एकेडेमिया में से हम कैसे एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि एक बच्चा है, ठीक है, आप जो पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, उसको क्या हम सोल की, माइंड की और उनके एक फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस दे रहे हैं? ये हमारा जो भी स्कूल का निज़ाम है, क्या अदरवाइज प्रोफेशनल ये जो भी 16-20 years ऑफ एजुकेशन है, क्या उसमें ये आप उसको एक होलिस्टिक रियलाइजेशन और पर्सनल अवेयरनेस डेवलप हम कर रहे हैं? एक बच्चा है, जब आप 3 साल का है, आपने उसको स्कूल डाल दिया, वो एक आम हाउस होल्ड पाकिस्तानी, उसमें वो कुरान की तरबियत के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी जा रहा है। उसको जाहिर है जब आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियोज जिस तरह से देख रहे हैं, अक्सर वालिदैन टीवी पे टॉक शोज देख रहे होते हैं, तो उसको ये कुछ पता है, आइडिया है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, ठीक है। फिर जब आप उसको, जाहिर है दादी दादा को वो या नानी नाना को वो नमाज भी पढ़ते देख रहा है, ठीक है, और फिर जब वो स्कूल जाता है तो आप उसको कहते हैं कि समव्हाट पाकिस्तान की बात करना या इस्लाम की बात करना या फेथ की बात करना या अपनी जो भी लर्निंग्स आपके बुजुर्ग आपको सिखा रहे हैं उसके साथ अपने आप को एक अलाइनमेंट में लेके आना, वो एक सेपरेट लर्निंग है, ये एक सेपरेट लर्निंग है, ठीक है। आप उसको ये देख, आजकल का बच्चा ये देख रहा है कि अच्छा जी टीवी पे हम और सोशल मीडिया पे हम गजा और पैलेस्टीनियन उसको हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कहीं स्कूल में बात नहीं है। कुरान के ऊपर हमें कुरान टीचर जो भी कारी साहब है वो बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं, लेकिन उसकी कहीं नमाज रोजा या उस ऑफरिंग की, रमजान की जिस तरह की ऑफरिंग है उसकी, उसके बारे में कहीं कोई स्कूल के लेवल पे उस इम्पैक्ट के साथ बात नहीं हो रही। तो एक छोटा नन्हा जहन विच इज 3 years old और 5 years old, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक थ्रस्ट के साथ, फिर जब वो बेचारा 18-20 साल 25 साल का होता है तो आप उससे एकदम ड्रास्टिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी आप एकदम से आप एंटरप्रेन्योर बन जाएं, जबकि आप उसको कितने हिस्सों में आपने उसको बांट दिया, ठीक है। तो फिर मुझे ये लगता है कि कुछ वी आर स्टिल गोइंग थ्रू अ कॉलोनियल हैंगओवर, कि हम वही बात है कि सबसे पहली बात तो ये कि देखें, जब जिस तरह से एक ह्यूमन कंस्ट्रक्शन जिस तरह से है हमारे माइंड, बॉडी और सोल की, जब तक हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक हम अपने बच्चे को ये खुल के नहीं बताएंगे कि भाई पाकिस्तान का बेसिक मकसद आपकी सोल और आपकी फेथ अलाइनमेंट है, एक सर्टन आइडिया है, एक सर्टन फेथ फॉलोइंग है जिसको आप इस माशरे में या इस एक कल्चर के में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर आप उसको जाहिर है कि उस हिसाब से हम इसकी स्ट्रक्चरिंग करें। क्योंकि देखें आजकल एक जब वंस वी आई हैव अ गुड लाइक यू कैन से एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल पॉकेट्स, और वहाँ पे वो लोग ये अक्सर होता है क्योंकि जाहिर है मॉन्यूमेंट पे हम लोग ये जो होस्टिंग कमेटी है फॉर स्टेट हेड्स एंड डेलीगेट्स, सो आई एम लाइक वन मेंबर ऑफ दैट, और अक्सर आके लोग मुझसे पूछे अच्छा ओके हिजाब ओके यस दिस इज अ वेरी फैबुलस प्रोजेक्ट बट हाउ मेनी फॉरेनर्स इन द प्रोजेक्ट,
ठीक है, वो हमसे एक्सपेक्ट ही ये कर रहे हैं। वी आर द फोर्थ मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, आप कहीं मुझे ये बता, हर टेक्निकल लैब में आपको पाकिस्तानी नजर आ रहा है, बाहर जहां जहां पे भी आप देख लें। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स मिल रहे हैं, लेकिन किसी सीईओ या किसी एक इंडस्ट्रियल लेवल पे या कहीं पे भी आप जो आप ये समझ लें कि वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को जो लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो आप उसमें कहीं पे आपको कोई पाकिस्तानी नजर आएगा। वाई ऑल आपके पास केस स्टडी क्यूबा की है, आप केस स्टडी जापान की देख सकते हैं, चाइना की देख सकते हैं, इंडिया की, ये सब वो ममालिक हैं जो हमारे आगे पीछे ही आजाद हुए। ठीक है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर जो करंटली हमारी, आई डोंट नो कि हम क्यों ककून वाइज स्टैब्लिश कर देते हैं, या एक दराज की बस हद तक एक बाउंड्री स्टैब्लिश कर देते हैं एक सर्टन आई। तो व्हाई कांट वी क्रिएट? एक तो ग्रूव ओरिएंटेड लर्निंग है, स्पेशलाइजेशन। द अदर डे आई वेंट टू द डेंटिस्ट और मैंने कहा भाई तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि न्यूट्रिशन के ऊपर मुझे क्या, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई डेंटल हेल्थ। तो उसने मुझे कहा कि ये तो फिर आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही जाके वही बेहतर बता सकते हैं। यू नो, सो मुझे ये लगता है कि हमारी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स भी हैं वो भी इतनी ग्रूव, और इस वक्त हमें रीडिफाइन करने की ये जरूरत है कि आपको अपने बच्चे को ये बताना है कि भाई आप जब कुरान पढ़ रहे हैं कारी साहब के पास जाके, जब आप क्या कहते हैं पाकिस्तान 23 मार्च है, जब वो टीवी पे ये सब जो भी आज का कंटेंट वो देख रहा है, उसके बाद वो अपने थॉट्स और आइडियाज को कहाँ लेके जाए, वो चीज फिजल आउट हो जाती है वंस द स्टूडेंट गोज टू द स्कूल। ठीक है, सो एक होलिस्टिक लर्निंग इस वक्त दैट पैराडाइम हैज टू चेंज, एजुकेशन पैराडाइम हैज टू चेंज इन पाकिस्तान। और इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हमें हैं, आप अपने बच्चे से आज पूछ लें व्हाट इज सीपैक ऑल अबाउट, कुछ नहीं पता उनको। आप उनसे ये पूछ लें कि चाइना, रशिया, यूएई, हमारे आसपास की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, आप शुरू करें यूएई से, इंडिया, चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, this is 2/3, we are the Islamabad is the center for 2/3 of the world's population। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप बच्चे को कहाँ ये बता रहे हैं कि जी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, अगर तुम एक टॉफी बना के बेचना शुरू कर दो तो आपका क्या कैरेक्टर हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं इसीलिए आई जस्ट फील के जो एक मैं कल भी आपसे बात हो रही थी कि मैंने अपने एकेडेमिया को, जैसे आप स्कूल का सिलेबस पढ़ना है, आपको कॉलेज का सिलेबस पढ़ना है, इवन इन द यूनिवर्सिटी सलीमा हाशमी वाज माय टीचर एंड शी वाज ऑलवेज लाइक तुम तो 2 घंटे में असाइनमेंट करके फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक आई हार्डली सी योर फेस हिजाब। और जाहिर है कि वो अम्मा को भी जानती थी, बड़ी मतलब जाहिर उनको ये शिकायत रहती थी कि स्टूडियो में तुम्हारी शक्ल ज्यादा। जब आई वॉज लर्निंग थिएटर, I was we were like doing campaigns for शौकत खानम। सो वही बात है कि मैंने 20% से ज्यादा टाइम अपने डे का फॉर्मल एकेडेमिया को कभी नहीं दिया, और मैं आज के यही वो करूंगी कि माई इंटायर शेयरिंग विद यू, आई एम नॉट लाइक कंसिडरिंग कि अच्छा जी ये कॉन्फ्रेंसेस का सर्टन एक डेकोरम है, होना क्या चाहिए आपको, आपके पास आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढनी नहीं है। नहीं हिजाब, सॉरी टू कट यू, ये देखे ना वही वाली बात है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये किसी इट्स ये बाउंडेड नहीं है कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। देखिए इस मैं तो ये समझती हूँ कि इस डे की थीम के हवाले से जब हमारे लीडर्स ने ये जहन में रखा था कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जिसमें हम अपनी मर्जी से इस्लामिक वैल्यूज़ को लेके चीज़ों को आगे चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसमें कोई लिमिटेशन रखनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू येस्टरडे also that this forum is, you know, it's a freedom of speech for all of you। आप लोगों के अपने पर्सपेक्टिव एज पर योर एक्सपीरियंस आपने जो गेन किया है और आप जो समझते हैं कितना हेल्पफुल हुआ है, कितने हद तक उस आपकी इनिशिएटिव्स ने सोसाइटी में चेंजेस लाई हैं,
दैट शुड बी द हाईलाइटेड इन दिस फोरम कि हमें पॉजिटिव देखिए चीजों वंस को वी सामने आर, लाए। मैं थोड़ा सा सॉरी टू कट यू, बट ये कि जब हम जाहिर है कॉन्फ्रेंसेस में बड़े डायरेक्टिव्स होते हैं कि ये बात आपने हाँ, इस नहीं तरह नहीं, से कहनी है, जब आई नो। प्रोजेक्ट लेवल पे तो आपने इस तरह से डिप्लोमेटिक पॉलिसीज को फॉलो करना है। बट ये कि वहां पे वही बात है कि इतना जब आप कैलकुलेटेड होते हैं तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके नहीं नहीं, सॉल्यूशंस की बिल्कुल। तरफ आप। देखें, ये तो मैं आपको यही बात तो कह रही हूँ ना कि ये जो फोरम है, इट्स एक्चुअली जो मेरी कंपनी का जो एम्पावर आई का जो विजन है वो यही है, टू एम्पावर पीपल एंड एम्पावरिंग पीपल टू बिलीव। लोगों को इतना मैं एम्पावर कर दूं कि दे शुड रियलाइज दिस थिंग, व्हाट इज द राइट थिंग दैट दे हैव टू मूव एंड व्हाट इज द रॉन्ग थिंग, और कौन सी डायरेक्शन में हमें मूव करना है। सो करना है। मुझे दैट्स बस व्हाई आई लास्टली एक पॉइंट दैट्स व्हाई आई मेंशन गैदर जरूर यू करना ऑल ना। चाहूँ। मैंने इसलिए आप लोगों को गैदर किया है बिकॉज देखिए, आपका हिजाब पर्सपेक्टिव वुड बी डिफरेंट, आपका एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, सदफ का एक्सपीरियंस है इज डिफरेंट, जवेरिया का एक्सपीरियंस है डिफरेंट। तो हम यही चाहते हैं ना कि हम डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस के साथ यूनानिमसली एट द एंड बिल्कुल जी। कम अप विद एंड द आई सॉल्यूशन। अप्रिशिएट यू हाँ, कि कम आपने अप। ये फ्रीडम दी। और मैं आखिर में अपने इसमें इस बाइंड अप इस तरह से करूंगी कि प्लीज एक बच्चों को एक सीक्वेंस में एक लर्निंग दें, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आज के किसी बच्चे को मिडीवल एज या करून उला का जो दौर था, वो हम ये कहते हैं कि जी आप अगर एक मुसलमान हैं या आप, तो उसमें वही बात है जैसे इकबाल ने भी कहा कि हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी कार कुशा कार साज। जब हमारा बच्चा बाहर दुनिया में निकलता है तो वो जब वेस्टर्न ग्लिट्स एंड ग्लैमर देख रहा है तो वो कहाँ से जाहिर है बिल्कुल सितारों पर डालेगा कमन। तो बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि मैं जरूर ये आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से भी कि बच्चों को मिडीवल इस्लाम पढ़ाएं। करून ऊला का जो दौर था जहाँ पे ख्वारज़मी अल बैरूनी सारे बिल्कुल फादर्स ऑफ बिल्कुल साइंस, बिल्कुल। सारे टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स एआई, या बिल्कुल। हम आज भी टेक ईडी के ऊपर बात करते हाँ, हैं, तो इन सब चीजों की एक फाउंडेशन रखी गई थी बिल्कुल इस्लामिक ईरा में। आ हजूर जिस एम्पायर की एक बेस आ हजूर ने स्टैब्लिश की थी, दैट कैन नेवर बी, उसके ऊपर बिल्कुल आज बात ही नहीं होती। तो बिल्कुल मैं आपको ये कहूंगी कि बच्चों को जरूर कुरान के बाद आप इस्लामिक हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ाएं, आर्ट हिस्ट्री पढ़ाएं, क्योंकि वहां से आप एम्पायर्स का राइज एंड फॉल। और मैं बल्कि ये बिल्कुल। थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगी कि जवेरिया सदफ एंड माई सेल्फ, हम राहीला दुरानी और शाइस्ता जैद, हम सब हमारे एक ही टीचर्स रह चुके हैं। तो मैं ये जरूर उन लोगों से ही ये सब कुछ हमने सीखा कि भाई आप एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से गलतियों से अपने सीखे, अपने प्रेजेंट को के अंदर एक यू मस्ट स्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड एंड इम्प्लीमेंट दैट बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर। एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें तो आप, वही बात है कि आपकी जाहिर है जब इन असूलों के ऊपर आप होंगे, तो आई थिंक अभी इस वक्त हमारे यूथ को, हमारे एकेडेमिया को एक कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कंसंट्रेशन के बाद देन स्टेप बाय स्टेप हमें इस सारे सिस्टम को इम्प्रूव करना बहुत चाहिए। बहुत खूबसूरत बात थैंक की आपने हिजाब इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से, क्योंकि हम आज अगर पूरी दुनिया से पीछे हैं, इसकी यही वजह है कि अपने अपनी बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ को हमने छोड़ दिया है। जो हमें हमारे नबी ने, यू। हमारे अल्लाह ताला ने कुरान में जो हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, हमने उनको इतना पीछे छोड़ दिया है, इसलिए हम वो खुद भी पीछे फलसफा चले है, गए हैं। वो जी, एक लाइफ बिल्कुल। का अ, फलसफा है, जी। बिल्कुल। जी जी। अब कमिंग बैक टू द माइंडसेट, सदफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम इतनी माशाल्लाह से बात की है, जवेदिया ने भी और हिजाब ने भी, माइंडसेट के हवाले से, हम अपने बच्चों के माइंडसेट के हवाले से, बिकॉज हमारे जो बच्चे हैं उनको वही 40 साल या 50 साल का जो फ्रेम ऑफ माइंड है, उनके जहनों में यही है कि हमने पढ़ना है और जॉब करनी है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, और इसके अलावा उनकी कोई और सोच नहीं होती। तो आप क्या समझती हैं कि हमें अपने अपने लेवल पे कौन से ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए, कौन सी इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए कि हमारे बच्चों का, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनका माइंडसेट चेंज हो सके टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल। देखिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट ये नहीं होता
कि आपने सिर्फ बिजनेस ही शुरू करना है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का यह मतलब होता है कि आपने अपने हिसाब से कोई अच्छी और यूनिक और इनोवेटिव चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है। इस सोसाइटी का कोई भी मसला जो है वो आपने हल करना है, क्योंकि हमारे सोसाइटी, हमारे पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली इतने मसाइल हैं, कोई इन मसाइलों के सोल्यूशन के बारे में सोचता ही नहीं है। बस वो ये सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएंगे, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे, हम लॉयर चले जाएंगे, हम बैंक में चले जाएंगे और हमने पैसा कमाना है। ये बच्चों का जो है ना आजकल के वो है एम होता है, उनका विजन ही यही है कि भाई हमने बड़े होके कमाना है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कौन से ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि इनके जो माइंडसेट है उनको हम चेंज कर सकें? जी सदफ। This is ironically the discussion I have every other day with the parents in the school that I work in. What I feel is कि ये बच्चों का problem नहीं है. Children are really adaptable. They're really creative. The younger they are, the more creative. Science proves that. जिस तरह वो बड़े होते हैं, हमारा educational system traditional उनकी creativity को कम करता जाता है. Critical thinking को हम काम करके एक streamline, standardized education and testing पे ले आते हैं, which actually diminishes their brain and creative mind. वो left hemisphere and right hemisphere brain के बारे में जब बात होती है तो हम intuitive mind और creative mind को subdue कर रहे होते हैं और analytical mind या language को हम enhance कर रहे होते हैं, which is good, but there should be a balance. The growth mindset is required for the parents and institutions and teachers more than the children, because the children are ready to grow. They want to bloom anywhere. If any opportunities you set in front of them, they'll grab on them. I think we need to give the opportunities. अभी भी मुझे जो प्रॉब्लम आती है वो बच्चों के साथ नहीं आती, वो मुझे टीनेजर्स के साथ नहीं आती, वो मुझे यंग एडल्ट्स के साथ नहीं आती, वो मुझे पेरेंट्स के साथ आती है, वो forcing the children to still take sciences, still become a doctor, still become an engineer or a lawyer. And you see, or a ACCA. हमारी job market, like Javeria pointed out, hijab के बहुत interesting points there. I enjoyed every one of them. The job market is saturated for these doctors. Pakistan has so many medical colleges graduating hundreds and thousands of doctors every year, जिनके लिए jobs नहीं, वो हमारे schools में आके applications दे रहे होते हैं job के. It breaks my heart to see engineers and doctors applying for teaching job or sports teachers job because they can't find jobs. हम ये क्यों नहीं देखते कि next 10 years, 15 years में job market कहाँ है? The world is changing. What does the world need? Rightly pointed out by a few of you earlier, it's in different fields which we are not surplus in, and we need to see कि वो हमें किस चीज़ पे बच्चों को डायरेक्ट करके अपने टैलेंट को लेके जाना चाहिए ताकि वो दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब्स पा सकें. हमारा डिलेमा इसमें ये भी है कि हम बहुत स्टैंडर्डाइज्ड, बहुत ग्रास रूट से लेके ऊपर तक बहुत ओल्ड स्कूल तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं. We are afraid of them making mistakes. We scare them from making mistakes. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं बात कर रही थी तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि every child has a right to succeed. Every child has a right to struggle. Please let them struggle. Please let them make mistakes. The way they learn from their mistakes is the best way to learn. हमें बहुत जल्दी होती है, हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा है as compared to other countries. आप देखिए हमारा curriculum, हमारी education is much harder. There's a lot of content. We're in a race to complete that. और उस रेस में हम बच्चों को ये लिबर्टी टाइम नहीं देते, ये स्पेस नहीं देते कि वो कोई गलती करके खुद सीख लें. We're ready to dictate them the answers instead of them coming up with the answers. We are ready to tell them, बेटा ये आपने इसी तरह करना है, एप्पल के अंदर आपने रेड कलर ही करना. If a child wants to color it purple, why not? Let them be creative. Hijab would understand this better. That the creativity जो है वो उनकी हम खत्म हो जाए. तो एक growth mindset is required on our part instead of a fixed mindset. उस growth mindset में बहुत ज़रूरी है critical thinking हो. हमारे curriculum को, हमारे syllabus को change किया जाए. We were not making them rote learn things. We're still doing that. I'm so sorry. I follow Cambridge, being in the Cambridge stream, O levels, A levels. वहाँ पे भी यही है कि हम उन्हें एक specific तरीके से answer करना है. ये आपने learn करना है, ये facts learn करना है. The world has changed. This is not the era of information anymore. This is the era of advancement, innovation. तो वो जो skill हमें देनी चाहिए,
वो है क्रिटिकल थिंकिंग, वो है क्रिएटिविटी। आप जब हमारी 21st सेंचुरी स्किल्स की हम बात करते हैं तो इसमें सब आती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, PBL. So in a number of schools that I've worked in, I introduced life skills as a subject and PBL. और वो आपके IB सिस्टम में जो वेरिया जैसे कि है, which is a very good thing. So what they need to learn over and above that is emotional regulation. You know what we face, the problems we're facing is IQ पे काम हो रहा है, EQ पे नहीं हो रहा. आपके हाई अचीवर बच्चा भी emotionally sound nahi hai. They don't know how to tackle themselves in the world when they leave the university. They don't know how to manage teams. They don't know how to be a team player. हमारे courses होते हैं leadership पे. अब देखिए हर जगह leadership पे course हो रहा है. It doesn't really make sense to make all of them leaders because leader एक होना है हर organization में. And बाकी सबने team player बनना है और वो skills हम उनको दे ही नहीं. So the social skills, the adaptation skills, the critical thinking, problem solving. Now, life is problem solving. हम उन्हें problem solving नहीं करा रहे हैं और हम उन्हें rote learn करा रहे हैं facts about the world history or Pakistan history. ठीक है, आप कराएं to some extent, but that is not needed because the world is in their palms. एक बटन वो प्रेस करते हैं, एक वो गूगल सर्च करते हैं तो उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. हमारे ज़माने की तरह नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में स्टोर करनी पड़ती थी. टू हैव एन आर्ग्यूमेंट, टू मेक अ स्पीच, टू वर्क, टू राइट अ पेपर. नाउ दे हैव इट. सो आई विल आल्सो टच अपॉन द असेसमेंट मेथड्स. कि हमारे असेसमेंट मेथड्स में भी rote learning is a major part of it, and it should be actually open book tests. Their analytical skills should be enhanced. Their problem solving skills should be enhanced. They should be able to assimilate things, understand, make comparison. वो copy paste की बात नहीं कर रही मैं कह रही हूँ कि open book इस तरह से हो कि they should be able to read new text, understand it, give their opinion, analyze it, justify it. Problem solving situations out there, PBLs उनको दें. That is going to make them very successful, practical individuals in any field that you talk about. This whole setup, this whole style needs to change. I would also, if you allow me, Humaira, would like to touch upon what Hijab mentioned. The holistic learning, the mind, body, and soul. So this is something which is very close to my heart. So I would like. Yes. We do realize that the biggest, the most massive crisis in the world. Do you know what that is? The most widespread crisis, a crisis, or you can say problem that everybody is facing. It's mental health. It's mental health. True. So when we're working on IQ and not on EQ, when we're not telling them how to resolve their emotions, how when they feel, to feel it, to heal it, not shut it out, not take it out in aggression, misdirect उसको ना करें, जो हम pent up करते हैं या हम उसको unregulated emotions को जमा करके फिर बाद में एक villain बना देते हैं बच्चे को या एक adult को. That has to be catered for in the beginning from the childhood, and I see this often, and it's very sad. Every child that I talk to in my counseling session, even adults that I talk to, उनकी इतने problems हैं कि वो आपको performance से भी पता चल रहा होता है. Sometimes they're academically not performing, and you talk to them, you find out the root cause is not academics. It's something that's happening at home, or they're unable to adjust in their social circle, or some other crisis. So if we cater to those problems, that you make a happy child, a happy learner. देखिए हमारा end goal हम सबका ना पैसा है, ना एक job है, ना गाड़ी है, ना घर है. It's happiness, right? तो हम इन different चीजों में, इन mean goals में एक end goal तलाश करते हैं जो happiness है. अगर हम बच्चे को पहले ही सिखा दें और उसको पहले ही facilitate कर दें कि how to be happy, a happy learner, a happy person, they will be good for themselves and for others around them. जो सारी problems हमारी social हैं और interaction में हैं, वो हमारी communication skills में limitations आती हैं, या फिर हमारी behavior में आती हैं. A lot of behavior problems. When I'm working with students for habit formation, personality, identity formation, I see these lacks, and I think this should be part of the curriculum. Because this is something that makes you who you are. When we go for an interview, we are selling ourselves, not a degree, not how much marks I got, what subjects I studied, when. Nobody asks us that when we go for an interview. We are selling ourselves. True. People are, and we are a good human being. That takes a lot of work that we are not doing with our children.
और वो हमें करने की ज़रूरत है. And for that reason, I just attended an international conference from British Council and Cambridge, and they said the Cambridge is launching a well-being curriculum. I don't know when it's going to reach Pakistan, but I think that on our part, even if that doesn't reach us, वो अगर आता है O levels के लिए, it's very small minority that is taking O levels. We should inculcate that and endorse that in all our schools and institutions, college level, university level, at homes, like Javeria said, starting from others. We need to tell children how to feel things, how to regulate emotions, how to act, how to behave. I think that is the basic, जिसे तरबियत हम कहते हैं ना, तालीम हो रही है, तरबियत की ज़रूरत. So this is what I wanted to bring my Very stress nice. on. No, very nice, Sadaf, on highlighting the mental, health, especially specifically related with the children, because अगर आप वही वाली बात है कि जान है तो जहां है, अगर आप सेहत आपकी है तो आप हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू जवेरिया, इतना अच्छे तरीके से सदफ ने हाईलाइट किया है ऑन दैट टॉपिक ऑफ माइंडसेट. आपने पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि बच्चों का माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. तो आप क्या समझती हैं, आप तो खुद भी इस प्रोफेशन में थ्रू आउट 23 ईयर्स, और आपने देखा है कि आपने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज या इनोवेटिव लर्निंग टेक्निक्स आपने अपने जो है टीचिंग में इंट्रोड्यूस किए हैं जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स पे, उनकी लर्निंग पे. आप क्या समझती हैं इस बारे में? As an educationist and as a human being also, I feel that connecting back to nature has always worked for my students, always. That there is no debate about it. The sooner they are connected to nature and natural ways and organic way of thinking, the mental health starts, it's a restoration system. Because वो healing power जब दे दी गई है अल्लाह ताला ने, नेचर में आपके रख दी है, तो उसके साथ आपका कनेक्शन जितना लूज होता जाएगा और जितना आप प्लास्टिक से कनेक्ट होते जाएंगे, फिर आपकी थेरेपी से या किसी भी किस्म की मेडिकेशन से मेंटल हेल्थ रिस्टोर नहीं होगी. सो आपका एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपका मिट्टी में हाथ डालना बहुत ज़रूरी है, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है. ये वाली स्किल्स हम छोड़ जाते हैं या बस डे बना लेते हैं किसका. इसको एक लाइफस्टाइल होना चाहिए. जितना ज़्यादा हमारी सोचें ऑर्गेनिक होंगी, जितना हमारा फूड ऑर्गेनिक होगा, वी आर व्हाट वी ईट, आवर गट इज़ मोर कॉन्शियस देन आवर ब्रेन्स एज पर लेटेस्ट रिसर्च. तो जितना हम अपनी गट को डिटॉक्स रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है वो बेहतर तरीके से काम करेगा. तो आई थिंक in as many places I've worked, in as many platforms I've been able to raise my voice to as many parents I've ever talked, I say कि 2 काम कर दें अपने बच्चों के लिए and they are set for life. एक उनको पेट्स रख दें और एक उनको रीडर बना दें. ये 2 आदतें बचपन से डाल दें. आधी एजुकेशन आप कर देंगे, बाकी आधा हम स्कूल कर लेंगे. सो ये 2 बड़ी, these are imperatives. और coming to animal love, coming to pets, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब एक बच्चा एक छोटा सा किटन या डॉग या कोई भी पेट हैंडल करता है, स्पेशली जो ज़्यादा इंटरैक्टिव पेट्स होते हैं, नॉट बर्ड्स एंड फिश, ऑल्दो उनकी भी केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसको वो फिजिकली ज़्यादा टच कर रहा होता है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स वहाँ से शुरू होती हैं. क्योंकि आपके अंदर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग चांसेस, डीलिंग विद लॉस ऑफ योर पेट, ये सब कुछ वहाँ से डेवलप होता है. और यही सारा कुछ आपने एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में देखना है. Adding to that, just getting very, very directly connected to the theme of the conference about women entrepreneurship, I would want to raise this awareness through this platform कि entrepreneurship की कुछ types हैं. And it's important that women who want to come into this field, or even anyone who wants to come into this field, must know that what are these types. और फिर आप उसमें अपनी niche या अपनी opportunity जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो आपकी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो आपकी उसमें कॉटेज इंडस्ट्री आ जाती है, उसमें एक स्मॉल टीम का सेटअप आ जाता है, उसमें फ्रेंड्स मिलके एक इस्टेब्लिश बिजनेस को चला रहे होते हैं, वो आ जाता है. मेनली उसमें कॉटेज इंडस्ट्री आती है आपकी. तो वो एक स्मॉल स्केल आपकी एंटरप्रेन्योर एफर्ट है. स्केलेबल एंटरप्रेन्योर, स्केलेबल स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो आपकी एक सेकंड कैटेगरी है एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें आप बिल्कुल स्क्रैच से एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं विद लेस इन्वेस्टमेंट बट मोर ऑफ एन आइडिया. स्टार्टअप्स स्टार्ट्स विद एन आइडिया, नॉट इन्वेस्टमेंट.
आप आइडिया जनरेशन करते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं या व्हाट नॉट, वो एक आगे फिर एक पूरी आपकी रोड मैप है उसका। सेकेंडली आपका जो थर्ड एंटरप्रेन्योर टाइप है वो द बिग कंपनीज, द बिग बिजनेसेस, द कॉन्ग्लोमरेट्स, आपकी जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चौथी एक चीज़ है जिसमें हर इंसान कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है और वो थोड़ी सी हमसे निगलेक्ट हो जाती है, वो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज व्हेन यू आर वर्किंग टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज। अब उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ही फर्क है। उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव मनी नहीं है, उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करना नहीं है, प्रॉफिट जनरेशन नहीं है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी फोकस्ड ऑन चेंज। एंड उस चेंज में ऑब्वियसली देयर इज नो वे कि आप अपनी लाइफ को बगैर मनी के स्टीयर कर लें। उसमें मनी जनरेशन की कैपेसिटी है अगर आप उसको उस तरीके से भी चलाएं, लेकिन साइड बाय साइड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली इन करंट वर्ल्ड जब आपका सोशल मीडिया, आपकी वर्चुअल रियलिटी हैज टेकन ओवर योर रियल लाइफ, उसमें सोशल एक्टिविज्म जो है वो आपको मनी जनरेशन की बहुत अपॉर्चुनिटीज दे देता है थ्रू सोशल मीडिया। बट सोशल एक्टिविज्म खवातीन बहुत अच्छा कर सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कुछ अगेन बाय डिजाइन बाय डिफॉल्ट उनमें कुछ स्किल्स होती हैं तो वो ये काम कर सकते हैं। दे आर बेटर एट कम्युनिकेशन, दे आर बेटर एट a number of other things. But there's a big but to it now. Women entrepreneurships, if they are working into social activism, must take into account that they have to be inclusive, they have to let go of bias, they have to let go of prejudice, they cannot be judgmental. It's not a खानदानी मसला या फैमिली पॉलिटिक्स कि आप उसमें वो वाले एलिमेंट्स भी हम खवातीन में लेट्स ओन इट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें एक बड़ी कॉन्शियस एफर्ट करनी है टू बी वेरी अनबायस्ड इन सोशल एक्टिविज्म। और फिर आपने हर तरह के ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना है। तो अगर मैं जा रही हूँ एक ऑर्फन हाउस में और मैं जाके वहाँ पे जो उसकी टीम है उसको ट्रेन करने जा रही हूँ, लेट्स से लाइफ स्किल्स पे बच्चों को ट्रेन करने जा रही हूँ, और मैं बहुत ब्रांडेड हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज किया हुआ है खुद को, और मैं बहुत ज़्यादा उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में मैं मिसफिट हूँ, तो मैं जो मर्जी बोला हूँ उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। सो आई नीड टू बी लाइक अ कैमेलियन, एक सोशल कैमेलियन, कि मैं जिस सेटअप में हूँ मैं उस सेटअप की पहले कल्चरल उसको बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करूँ। मैं इंक्लूसिव हूँ अपने माइंडसेट में। मेरी एंटरप्रेन्योर सोशल एक्टिविज्म जो है या सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो एक सर्टेन कम्युनिटी तक लिमिटेड ना हो। वो नादिया जमील जैसे लोग हैं जो जोसेफ मोहल्ला भी अगर जल रहा है, जोसेफ कॉलोनी, तो वो वहाँ पे भी जाएगी, वो वहाँ पे भी काम करेगी। आई वुडंट वांट टू नेम आयशा रजा कि जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की तो उन्होंने डेफ एंड डम लोगों को हायर करके अबे खाओ जैसे फूड स्टॉल्स लगा दिए। व्हाट एन ऑसम आइडिया कि आपने अगर पैसा भी जनरेट करना है या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप अपने से बहुत मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करके ढूंढ सकते हैं और बड़ा कमाल काम कर सकते हैं। एंड लवली फूड दैट अवे खाओ वेंडर्स। सो आप ट्रांसजेंडर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाके हर तरह के उन लोगों के साथ काम करें जो आपसे डिफरेंट है। तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, इट्स अ वेल्थ, इट्स अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो देयर इज नो डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, it's just that you need to identify and then open up to the risk and inclusiveness. नहीं, बहुत अच्छा तरीके से जवेरिया आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है इस इशू को कि ग्राउंड लेवल तक जाके हम लोग जो है ना इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, अपॉर्चुनिटीज़ हंट करें। क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप ही वहाँ पे होती है जहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम ना होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप होगा भी नहीं। So we have to look into the problem at grassroots level, just like that you have said it. And coming to the hijab on this specific जो है topic, I think so hijab का अपना भी experience होगा because you have told me before that you have been into the grassroots level of that labor to do all these your achievements. आपने जो ये monument के हवाले से मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा सा इसको highlight करें किस तरीके से आपने जो इतना माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएटिव जो है आपने इसको कंप्लीट किया, तो उसके बैक ऑफ माइंड में आपके और क्या स्टोरी थी, जिसको कौन सी चीज़ें थी, जो चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, और ये किस तरीके से ये जो पाया तकलीफ तक पहुंचा आपका ये प्रोजेक्ट। मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सी खवातीन हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं और वो करना चाहती हैं,
तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमने ऐसे ही नहीं घर बैठ के कोई चीज़ बना लेनी, हमने इसके लिए क्या क्या जो है स्ट्रगल्स करने हैं। एग्जैक्टली, आप काइंडली थोड़ा सा उस पर हाईलाइट करें हिजाब। अच्छा, कुछ तो ये कि मैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ एंड बिसाइड्स एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात जब हो रही है, तो मैं सबको एक कह लें कि एक सजेशन या एडवाइस ये करती हूँ कि स्टे इन योर अचीवमेंट जोन। ठीक है, जब आप एक अचीवमेंट जोन, एक माइंडसेट किस तरह से आपने बनाना है कि आपने एक सर्टन, मैं ये कहती हूँ कि मेरे इसके पीछे जो ड्राइव है ना, दैट आई हैव अ ब्रोकन टाइल सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें ये कि अगर कुछ भी कहीं पे अगर सारी टाइलें अच्छी तरह लगी हुई है फ्लोर के ऊपर और उसमें एक टाइल टूटी हुई है, तो वो आपकी आंख को या आपके एस्थेटिक्स को वो डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, so that is synonymous to every field and every area of your ऑब्जर्वेशन। जो भी हम जिंदगी में अपने प्रोफेशंस हैं, पर्सनल लाइफ है, तो मैं ये कहती हूँ कि भाई आप एक अचीवमेंट जोन में रहें। ठीक है, वो अचीवमेंट जोन अब कैसे अचीव किया जाए, इट इज नॉट कि अच्छा अभी हमने सोचा कि ये प्रोजेक्ट इस तरह से कर लेंगे, ये काम इस तरह से कर लेंगे, वो हमने एक कंप्लीशन तक पहुंचा भी दिया तो अच्छा जी एक अचीवमेंट जोन। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको वही बात है कि एक स्टूडेंट ही कह लें कि अब आप जैसे ये पूछें कि फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट का जैसे स्केल है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि आई वॉज 22 years old once I won this project। ठीक है, अब लोग मुझसे पूछते हैं बट कि आपने इतनी यंग एज में ये कैसे अचीव कर लिया, तो अब वही बात है कि पीपल ऑलवेज से कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिले तो हम ये कर सकते हैं, ये कर, भाई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हो सकती है, जैसे सदफ को मैं रेफर करूंगी, उन्होंने पहले से ये कहा। तो उसमें यह कि यही एक अचीवमेंट जोन में मैं थी कि भाई ये प्रोजेक्ट मैंने विन करना ही करना है, ये सोचा ही नहीं कि अच्छा ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने प्रैक्टिकली 3-4 जैसे फैमिली इवेंट्स पे, मैं आपको भी बहुत किस तरह से ये हुआ कि मुशर्रफ साहब मुझे नजर आए तो उनको मैंने कहा कि भाई आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, उन्होंने कहा वो ऐसे सर पे वो करते हुए कि आप तो छोटी सी हैं, आप कैसे कर सकेंगी ये काम। ठीक है, बट ये कि 4 years मुझे उसकी रिसर्च, उसके आप यकीन करें कि आई हैड टू स्टडी द इंटायर लाइक इस्लामिक हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द region, South Asian region, and then like Pakistan movement, and then creating that context। और फिर ये कि अच्छा अब आप एक ग्लांस में अगर 2 घंटे के लिए कोई फॉरेन कोई डेलीगेशन आ रहा है या कोई फॉरेनर आ रहा है और बिल्कुल आप ये समझ ले कि एक साइकिल पे सवार एक मजदूर है, तो उन दोनों की सब्सेप्टेबिलिटीज, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको आपने ब्रिज करना है किसी एक जगह। अब जब हम एकेडमिक्स के ऊपर आते हैं, लिखाई पढ़ाई के ऊपर आते हैं, बुक रीडिंग के ऊपर आते हैं, तो जाहिर है कि कुछ प्रोसेसेस जिस स्पीड पे अब लाइफ हमारी चल रही है उस स्पीड पे तो जाहिर है इट टेक्स टाइम। तो जब आप म्यूजियम्स क्रिएट करेंगे, जब आप अपनी सड़कें ऐसी डेवलप कर लेंगे, अपने पार्क्स इस तरह से डेवलप कर लेंगे, तो अपने घरों को इस तरह से, मैं मदर्स को ये कहती हूँ कि भाई आप अपने घरों को इतने डेक्ड अप ड्राइंग रूम्स नहीं होने चाहिए आपके घरों में अगर छोटे बच्चे हैं तो। कन्वर्ट योर स्पेसेस, कन्वर्ट योर सिटिंग स्पेसेस टू लैब्स, कन्वर्ट योर बच्चों के कमरों को एक स्टूडियो की काइंड ऑफ, इतने लैविश फर्नीचर्स बच्चों को आप क्यों, उनको एक लैब इस्टेब्लिश करके दे दें। कंप्यूटर साथ पड़ा है तो उनके पास एक एआई या रोबोटिक्स की एक छोटी सी उनके पास होम बेस्ड एक लैब होनी चाहिए। तो कमिंग बैक के अब आप ये देखें कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट लिखना था फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे वो बाकायदा अपने चचा के साथ बैठ के मैंने वो लॉफुल लैंग्वेज सीखी, जिसका मैंने वो 18 पेजेस का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया। अब फिर उसके बाद ये कि उसको किस तरह से परस्यू करना था, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस थी, इदारे थे जिनके पास जाके प्रेजेंटेशंस देनी थी। एंड लेट मी ऐड हियर दैट आई वाज आल्सो लाइक 4 to 5 months प्रेग्नेंट एट दैट टाइम।
ठीक है। सो उस सारी सूरत हाल के साथ फिर वही बात है, द डे माई डॉटर वॉज born आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट के उसके जितने भी डिजाइन एंड डेकोरेटिव एलिमेंट्स थे। तो वही बात है, पहले जिस वक्त आई वॉज लाइक इन माई अवेयरनेस, तो मेरी अम्मा ने मुझे पहले बताया हिजाब यू गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, बजाय इसके कि मुझे बता देंगे बेटी ये जो है माशाल्लाह यू गॉट अ बेबी गर्ल। सो कहने का मकसद है कि इट वाज वंस यू आप जब एंटरप्रेन्योर है या किसी चीज की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो वही बात है कि देयर इज एन इंडियन बिजनेस प्रोफेशनल हु वंस सेड के यू हैव टू ब्रीड दैट कॉन्सेप्ट आपके सेल्स मसल्स टिश्यूज आपका ब्रेन, आप क्या खा रहे हैं, आपके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो खून नहीं होना चाहिए, फिर वो आइडिया होना चाहिए। सो दिस एक जनून की सी कैफियत अपने ऊपर तारी कर लें अगर आपने वाकई में। और ये जिस तरह के चैलेंजेस मुझे लगता है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी के हैं ऑन एवरी लेवल, जिसमें हमारे एथिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें हमारे आप ये देख लें कि कहाँ कहाँ किस किस डिटीरियरेशन का आप को पॉइंट आउट करें, तो उसमें यही है कि इस वक्त आपकी एकेडेमिया मस्ट इंट्रोड्यूस कि बच्चों को इस वक्त एक अचीवमेंट जोन में आपने रखना है। आप जब एक चीज बिल्कुल परसीव करके उसको एक तख्लीक के एक प्रेजेंस या एक आप कह लीजिए कि उसको एक पाया तकमील तक आप जब पहुंचाते हैं, तो अब वो जो आपको एक सेंस है, आपकी थकन, आपके ये सारे मेंटल मेंटल हेल्थ के डिसऑर्डर्स, इमोशनल हेल्थ के डिसऑर्डर्स, सब कुछ, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो एक कह लें कि रिजॉल्व के अंदर जब मसरूफ रहेगा, तो फिर जाहिर है कि आपको आपकी नेगेटिव पोटेंशियल्स की तरफ आपका ध्यान कम जाएगा और पॉजिटिव पोटेंशियल्स के ऊपर, क्योंकि दोनों चीजें बहुत दोनों अच्छी। हाँ जी, खुशी होगी, ग्रीफ होगा तो खुशी महसूस होगी। बिल्कुल अब अगर कोई चीज टूटी हुई होगी तो उसके बारे में आप सोचेंगे कि इसको हमने ठीक कैसे करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब आपने बहुत अच्छा जो है ना इस चीज़ को ना समराइज किया, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी हैव गेन, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस के, एंड जो भी इंशाल्लाह जब देखेंगे हमें यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डेड, दे विल बी गेनिंग अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस. Now coming to the end of this conference, because we almost crossing the time that we have set. So हम अब आते हैं as per the day of the resolution of 23rd March. I want all of you to come up with one resolution that you want to implement in your initiatives and projects, so we can follow up with all these resolutions, how it is changing the it is changing our future generation, जो उनका जो perspective है या mindset है, how it will be changing. So let's start it with Sadaf. Sadaf, can you give me one precise line of your resolution for this day, that how can we change and how can you take the initiative to change the mindset of that students and redefine the education as per the theme of this conference? In one line, I want to. Thank you. Redefining education and curriculum, I would like to emphasize on well-being and mental health for both students and staff, to incorporate that, inshallah, to have wholesome human beings developed in Pakistan. ठीक है. Javeria, coming back to you, आप मुझे बताएं एक लाइन में your resolution that it can change our future generation mindset and redefine the education. बड़ा अपहिल टास्क है एक लाइन में बोलना. ये आपने बड़ा जबरदस्त चैलेंज दिया है. वो चैलेंज बोलने की बोल रही कोशिश हूँ करते हैं. पहले बिफोर प्लीज आप बोलें. Go ahead. Before I say that, I feel those same goosebumps which I felt when I first visited monuments. And now when you've told Hijab about your daughter being born on the day when the contract was approved, again feeling the same goosebumps. So, mashallah. It's an experience to visit that place. और जब फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो आप उस ट्रेन के सामने जो वो पूरा सीन है, माइग्रेट कर रहे हैं हमारे जो लोग, वो मेरे ख्याल में you have to be a very very stone hearted person not to cry while you're visiting that place.
So जैसे आप hats ये off to you. सोच लीजिए कि आप ये जब करंट सूरत हाल देखी जाए और जब आपका वो इतना हो चार्ज अप विद योर मैं बस नेचुरल ट्रैजिक ट्रैजिक है। जी बहुत जी ट्रेजिक। जी मेरिया, आप बताएं। और अगर कोई लिटरेचर का पर्सन हो तो वो उसको तो ये एब्सर्डिज्म लगेगा ना कि हम किसी एब्सर्डिस्ट प्ले में बैठे हैं जो अब हो रहा है। मेरी एक लाइन ये होगी हुमैरा, मैं आई एम ट्राइंग टू इवेड द चैलेंज, लेकिन लेट मी कम अप विद वन लाइन के बी नेचुरल टू मेक सुपर नेचुरल वंडर्स। वाह। नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस। जी हिजाब। जी मेरा तो आई एड्रेस माय यूथ हियर दैट मैं तो आपको ये कहूंगी कि आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें। करून उला का टाइम, उर्दू में उसे करून उला कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मिडीवल एज कहते हैं। टेक रेफरेंसेस फ्रॉम द फादर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ हु एस्टैब्लिश्ड द मॉडर्न लाइफ वी लिव टुडे। establish a firm identity and a strong foothold। एंड फिर आप ये देखें कि जो मॉडर्न एजुकेशन पैराडाइम्स हैं वेस्ट के या कुछ, उनको आप किस तरह से ब्रिज कर सकते हैं और किस तरह से व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। वंस यू सी द एनवायरनमेंट अराउंड यू, उसकी अलाइनमेंट के अंदर आके आप अपने इनिशिएटिव्स लें, चाहे वो एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव्स हैं, चाहे आपने कुछ किताब लिखनी है, चाहे आपने कोई टेक्नोलॉजी, मेडिकल, किसी भी फील्ड में कोई काम आपने करना है, तो उसका लर्निंग हिस्ट्री, आपका फैब्रिक, वो समथिंग आज भी उमर लॉ जो है, हजरत उमर फारूक का जो गवर्नेंस का लॉ है, Scandinavian government is established on that, and Scandinavia is supposed to be the most happy, they are the happiest country, citizens and the happiest country. So हम वही मुझे लगता है कि हमारी मिरास है, उस उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर रहते हुए आज की जो मॉडर्न लाइफ हमें लगता है कि अंग्रेज बहुत आगे जा रहे हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत आगे है और शायद हम बहुत पीछे रह गए। नहीं, हमें सिर्फ उस फाइबर को दोबारा से उस अपने डीएनए को रेगुलेट करना है, रिजुवेनेट करना है, एंड देन एस्टैब्लिश a strong foothold, establish strong identity and then move forward। बात वही है। As such, मतलब सिर्फ it's just a matter of new techniques and new ideas and innovation। Very nice, Sadaf. So we will definitely beautifully concluding with well-being, mental health, number 1 resolution. Second, be natural, stick to that. Number 3, an Islamic value. हाँ बिल्कुल, इन सब चीज़ों को मिला के इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। एंड आई विल रिकॉल द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सेइंग थी, जो 1947 में उन्होंने एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था कराची में ऑन 27 को। एंड आई एम रियली सरप्राइज टू सी दैट वट एवर यू हैव सेड, it's reflecting on his saying, and I want to say this thing, as he said, we have to build up the character of our future generation, which means highest sense of honor, integrity, selfless services to the nation, and sense of responsibility. And we have to see that they are fully qualified or equipped to play their part in the various branches of economic life in a manner which will do honor of Pakistan. So I'm so pleased and amazed to see that this saying of Qaid-e-Azam is absolutely and beautifully covered by all of you. Thank you so much. I'm really honored, grateful for your very contribution here. Thank you for inviting us, Humaira. Or just check your WhatsApp. I have given you a token of appreciation. Thank you. Yeah, it's beautiful. I want you to show it to this screen. Then this is small, very small thing, but whatever you have contributed, it means a lot to us. And definitely all of the participants और जो देखेंगे हमारे इंशाल्लाह recorded session को, they will be gaining a lot of it. Once again, thanks a lot, and it's pleasure to have you all. Thank you so much. Thank you. So much. Thank you. You're welcome. And one more thing, I want all of you to say the same thing. Together we will rise and together we shine. Inshallah. Right. Absolutely.
Absolutely. So, Thank you. thank you so much and happy Resolution Day. Thank you. Thank you.